Hello friends, welcome to my channel Literature Kingdom. Today we are going to start our new series of drama. Drama is very first unit of the syllabus of UGC NET English Literature. So we are going to start with it. जो ड्रामा है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा है, तो मैं उसे आपको यूनिट वाइज समझाऊंगी, पार्ट्स में समझाऊंगी ताकि आप भी इजीली समझ सकें और सब कुछ मगअप ना हो. तो हमारा फर्स्ट पार्ट है एंशिएंट, मेडिवियल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा. Drama is believed to have started its journey as early as 5th century BC. The main function of drama is to reflect society and its current culture. Modes of drama keep changing from time to time. Mystery and morality plays were the most popular form during the Anglo-Norman and the Revival Age. Every Man is considered to be the best morality play of said age. जो एवरी मैन है वो बेस्ट मॉरलिटी प्ले का नाम दिया गया था उसे कि ये बेस्ट मॉरलिटी प्ले है. सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द ड्रामा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रामा. So in it, the word drama is derived from the Greek word chan, which means to do or to perform. This word chan, it means to do or to perform. Technically, it means a deed or action on the stage. Drama has a particular relation with action. जो ड्रामा है उसको ड्रामा क्या होता है, कुछ एक्शन करना, कुछ करना. दैट इज द रिलेशन विद द एक्शन. ड्रामा इज नीदर द नेम ऑफ स्टेटमेंट्स इन डायलॉग nor just a collection of character as well as events, nor is the just entertainment and philosophy. Okay, somewhere it is meant that purification of hearts and sometime for salvation. एंटरटेनमेंट में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट्स और समटाइम सेल्वेशन को जो शो करते हैं ड्रामा के थ्रू करते थे. इट्स एलिमेंट ऑन द वन हैंड इंक्लूड कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट एंड डायलॉग, एंड ऑन द अदर हैंड stillness, sound and light. So it is difficult to define drama in brief. In literature, a drama is portrayal of fictional and non-fictional events through the performance of writing dialogue, उसमें चाहे prose हो चाहे poetry हो. Drama can be performed on stage, on film or the radio. ड्रामा इज़ टिपिकली कॉल्ड अ प्ले. जो ड्रामा है उसको हम प्ले भी कहते हैं. एंड इट्स क्रिएटर आर नॉन एज प्ले राइट्स एंड ड्रामेटिस्ट. जो लिखते हैं, जिसको हम ये कहते हैं ड्रामा जो राइट कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उनको हम प्ले राइट और ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं. ड्रामा डिपेंड्स हेविली ऑन स्पोकन डायलॉग to keep the audience informed about the characters' feelings, personalities and motivations and some kind of plans. So this is our main introduction of drama. These are some keywords, or you can say that these are some key points which you have to keep in mind. अगर आपको ड्रामा समझना है तो ये कुछ चीज़ें, जो कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अपने माइंड में रखने होंगे, उसके बाद ही आप ड्रामा समझ पाएंगे. सो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ड्रामा. देयर आर मैनी टाइप ऑफ ड्रामा एज यू सी इन द स्क्रीन. दैट इज कॉमेडी, ट्रेजेडी, मेलोड्रामा, ट्रेजिक कॉमेडी, फार्स एंड ओपेरा. सो हम इन सब को थोड़ा एक्सप्लेन करके समझेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. So first is comedy. Comedy is lighter in tone. Comedies are intended to make the audience laugh and usually have happy endings.
Comedies plays offbeat characters in unusual situation, causing them to the and say funny things. Comedy can also be sarcastic in nature, poking fun at serious topics. There are also several sub-genres of comedy. That is, कॉमेडी के सब genres भी होते हैं, जैसे रोमांटिक कॉमेडी, ओके, सेंटिमेंटल कॉमेडी, comedy of manners, and last, tragic comedy. Okay, these are 4 sub-genres of comedy. आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपने पास. ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए. Okay, now next come to the tragedy. Tragedy is based on darker themes. Tragedy portrays serious subjects like death, disaster, and human suffering in a dignified and thought provoking way. जो ट्रेजेडी है उसमें मतलब कुछ गलत सा ही होता रहता है, डार्कर थीम होते हैं, और ट्रेजेडी मतलब कुछ ना कुछ सौरो वाला, कुछ एकदम होने वाला, जिसे हम ट्रेजेडी समझते हैं, त्रासदी, वो ही होती रहती है इन वाले प्लेज में. रेयरली इंजॉइंग हैप्पी एंडिंग्स, बहुत रेयर होता है कि इनकी हैप्पी एंडिंग होती है. कैरेक्टर्स इन ट्रेजेडीज लाइक शेक्सपियर्स हैमलेट are often burdened by tragic character flaws that ultimately lead to their demise. जैसे हमने हैमलेट पढ़ा है विलियम शेक्सपियर का, उसमें क्या था, वो सारा प्ले ही ट्रेजिडी पे भरा हुआ था. किसी के उसके फादर की डेथ हो गई, फिर कभी किसी ने किसी को मार दिया, कभी किसी ने किसी को मार दिया, तो सारी ही ट्रेजिडी थी वो. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द मेलोड्रामा. द वर्ड मेलोड्रामा इज coined from mellow word mellow, which means music. Okay, and next dran, दो वर्ड से मिलकर मेलोड्रामा बना है. मेलो मीन्स म्यूजिक एंड ड्रान मीन्स ड्रामा. आप नोट डाउन करते रहिए साथ साथ. ड्रान मीन्स ड्रामा. ठीक है. It is therefore a play that utilizes music extensively. But the utilization of music is not the only factor in melodrama. सिर्फ म्यूजिक ही एक फैक्टर नहीं होता मेलोड्रामा में. What really makes it melodrama is its portrayal of the protagonist and the antagonist. आप ये चीज़ एक बार नोट कर लीजिए, that utilization of music is not only the factor in melodrama. What really make it melodrama? It is the portrayal of protagonist and the antagonist. Okay, the protagonist suffer a lot but triumphs in the end, while the antagonist suffers. So melodrama can be defined as a play that has serious action caused by villain and a destruction of villain, which bring out a happy resolution in the play. Are you getting my point? आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा. अगर आपको कुछ और जानना है, किसी तरह की कोई PDF चाहिए, आई विल सेंड इट टू यू. आप मुझे अपना ईमेल आईडी भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं आपको पूरी PDF उस पर सेंड कर दूँगी. नाउ नेक्स्ट इज़ ट्रेजिक कॉमेडी. We have seen that tragedy in a serious play that ends on a sad note, while comedy ends happily. ट्रेजिक कॉमेडी के जो ट्रेजेडी है उसमें एंडिंग जो होती है मोस्टली सॉरो से भरी हुई होती है, और कॉमेडी में जो एंडिंग होती है वो मोस्टली हैप्पी एंडिंग होती है. इन ट्रेडिशनल ट्रेजेडी playwright were not allowed to bring in any comic action, like in Oedipus Rex. For example,
We also observe that the atmosphere is tense from beginning to the end. जैसे जैसे टाइम चलता गया, इवन फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड कॉमिक कैरेक्टर वर इंक्लूडेड इन द ट्रेजिक प्ले. दिस इज कॉल्ड कॉमिक रिलीफ. इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया कॉमिक रिलीफ. किसके लिए कॉमिक रिलीफ वर्ड यूज़ किया है? एलिजाबेथन पीरियड में जब कॉमिक कैरेक्टर्स को ट्रेजिडी प्लेज में इंक्लूड कर दिया गया तो उसे कॉमिक रिलीफ कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ट्रेजिडी बहुत ज़्यादा एकदम सौरो हो जाता है. उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स डाल देते हैं ताकि माहौल थोड़ा बैलेंस्ड रहे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फार्स. Farce, which is referred to a comedy of situation, is a humorous play on a trivial theme, usually one that is familiar to the audience. The theme that are treated in farce include mistaken identity, elaborate misunderstanding, switched custom, heroes forced under tables, misheard instructions, discoveries, disappearances, and many such situations. It presents physical activity that grow out of situation. Farce does not treat serious social issues. ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिए. Farce does not treat serious social issues. Now the next point is opera. The versatile genre of drama combines theatre, dialogue, music, and dance to tell the grand stories of tragedy or comedy. ये एक वर्सेटाइल टाइप थी ड्रामा की जिसमें थिएटर, डायलॉग, म्यूज़िक, डांस को सब कुछ होता था. एक ग्रैंड स्टोरी की तरह, जैसे कहते हैं ना, मूवी की तरह दिखाया जाता था, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो ट्रेजेडी हो. Since character express their feelings and intention through song rather than dialogue, performers must be both skilled actors and singers. The decidedly tragic La Boheme by Guillaume Puccini and Bodley comedy Falstaff of Giuseppe are classic example of opera. आप इसे नोट कर लीजिए, ये स्पेलिंग्स थोड़ी ऐसी है. ला बोहेमे बाय जियासमो पी. This work from him and Falstaff by Giuseppe Verdi. This from him. These both works are the classic examples of opera. नोट कर लिया आप लोगों ने? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करती रहिए. Now come to the next part, and that is ancient and medieval drama. So now what is ancient and medieval drama? Ancient Greek drama was the first seed which was sowed and become a base for all later dramas. The Roman dramas was an offshoot of the Greek but was soon degraded and corrupted in later empires. We can say that drama arose in 10th century in monasteries when modifications were being done in mass. Religion could be explained to the illiterate using the plays
which depicted scenes from the master's life. Now, this is ancient and medieval drama. Now come to the elements of drama. That what are the elements of drama? According to the Aristotelian convention, six basic elements are followed in any drama across these eras. These are the six types, that is dianoia. The theme of the play, main thing is theme of the play, is the central idea around which the story is built. It is neither expressed through dialogues or actions or inferred after the entire performance. Second is mythos. The order of events occurring in the play is a plot. What the characters do, what happened to them in the end, constitutes the plot. The unfolding of the story through the series of incidents, the sequencing, the background, and the climax constitute the plot. Next is ethos. The character of play are essentially the person who perform the drama. They are interwoven with the plot and bring out the theme of the play. Next is lexis. The diction or the language used in the most important aspect of a play. It is only through the language, the dialogues, that the playwright communicates with the audience and brings his character alive. The wit, accent, tone, soliloquies are a few techniques which say a lot about a character. Language may include both verbal and non-verbal techniques. Next is mellows. That is the music composition. The music composition, the sound and rhythm of dialogues, the background score and sound effect is the mellows element of the drama. The right kind of music placed at the right point in the story elevates the drama to another level. In Greek plays, mellows would also consist of the utterances of the chorus. Next is opsis. The visual elements which like costumes, special effects, stage prop, and the makeup accentuate the visual elements of the play and highlight the characters. So these are our 6 elements, जिसमें डायनिया में हमें मेन चीज़ है थीम ऑफ द प्ले, माइथोस में है ऑर्डर ऑफ इवेंट अकरिंग इन अ प्ले इज द प्लॉट, एथोस में है कैरेक्टर ऑफ द प्ले, लेक्सिस में है जो लैंग्वेज और डिक्शन यूज़ हुई है, मेलोज में म्यूज़िक की बातें हैं और ऑप्सिस में विजुअल एलिमेंट्स है. नाउ द नेक्स्ट इज ड्रामा ऑफ द एज ऑफ रिवाइवल. In this age there are 3 type of drama, that is mystery plays, miracle plays और morality plays. ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे विद एग्जांपल कि उस टाइम में कौन कौन से वर्क्स थे इनसे रिलेटेड. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फर्स्ट इज मिस्ट्री प्ले. मिस्ट्री प्लेस ड्रामेटाइज स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल. जो मिस्ट्री प्लेस थे उनकी स्टोरी मेनली बाइबल से ली जाती थी. दे इंक्लूडेड ड्रामेटाइजेशन ऑफ द फॉल ऑफ लूसीफर, कैन एंड एबल, नो एंड द फ्लड, द नेटिविटी एंड द पैशन ऑफ द क्राइस्ट. द मिस्ट्री प्लेस वर लॉन्ग साइक्लिक ड्रामास ऑफ द क्रिएशन, फॉल एंड रिडम्पशन ऑफ ह्यूमन काइंड बेस्ड ऑन बिब्लिकल नरेटिव्स. आप एक बात नोटिस करिए कि जो मिस्ट्री प्लेस थे ना उसमें मेनली बाइबल को मेन मुद्दा बनाया गया है. जो चीज़ें हैं, जो स्टोरीज़ हैं, वो सारी बाइबल से ली गई हैं. आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी. In this, they were traditionally performed on
Corpus Christi Day, one of the many festival days of the Christian calendar, and so were also known as Corpus Christi plays. ये जो मिस्ट्री प्लेस होते थे ना, वहाँ पे एक फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, कॉर्पस क्रिस्टी डे। क्रिश्चियन कैलेंडर में कुछ दिनों का ये एक फंक्शन होता है, एक ट्रेडिशन होता है, और उस दौरान जो मिस्ट्री प्लेस किए जाते थे उन प्लेस को हम कॉर्पस क्रिस्टी प्लेस भी कहते हैं। Now some example of mystery plays are the Wakefield Cycle, Second Shepherd's Play, the Chester Play and the Coventry Plays। हम छोटा छोटा डिस्कस करते हैं इन सभी प्लेस में छोटा छोटा क्या था, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि किस टाइप के प्लेस थे, उनमें क्या स्टोरी हुआ करती थी। अगर आपको प्रॉपर पढ़ना है तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप एक एक प्ले को प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं प्रॉपरली आपको सारा एक एक प्ले पढ़ाऊँ, तो मैं आपको समरी बता दूँगी साथ साथ। लाइक इन द वेकफील्ड साइकिल, the Wakefield cycle has several brilliant plays attributed to the anonymous Wakefield master. This cycle consists of 32 plays commencing with the creation, and the Second Shepherd play is one of the masterpieces of the medieval English literature. जो वेकफील्ड साइकिल थी ये खाली एक वर्क नहीं है, इसमें 32 प्लेज हैं। ये एक पार्ट है, ये पूरी बुक थी जिसमें 32 प्लेज थे, उसको वेकफील्ड साइकिल कहा गया है। और सेकंड शेफर्ड प्ले जो है वो इसी का ही पार्ट था, वेकफील्ड साइकिल का एक पार्ट सेकंड शेफर्ड प्ले था। हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। द सेकंड शेफर्ड प्ले वॉज रिटन इन द लेट 15th century. It is a part of the Wakefield mystery play cycle. The title of the play refers not to the second shepherd, but to the fact that this play was the second of the two plays that dealt with the biblical native story. Next is the Chester play. There are the 25 Chester plays are more serious and didactic, acted on Monday, Tuesday, and Wednesday in Whitsun week from 1268 to 1577. Then in 1600, ये 25 चेस्टर प्ले थे जो कि मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को परफॉर्म करते थे विट्सन वीक में, नियरली अबाउट 1268 से लेकर 1577 तक, और फिर 1600 में 1600 में। Important plays of this cycle are Fall of Lucifer and the Creation and the Fall. ये तीन टाइप के जो प्लेस थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। Using strange animal and the flight of pigeon added interest and made these more realistic. इसमें एनिमल्स का यूज़ करते थे, अलग टाइप पिजन्स को दिखाते थे, और इसमें अलग तरह के इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा रियल लगे। Now come to the next one, that is miracle play. Miracle plays were representation of lives of different saints. देखिए जो हमने पहले किया मिस्ट्री प्ले किए, उसमें मेन जो बेस था वो था बाइबल से स्टोरीज लेना, ठीक है। और जो मिरेकल प्लेस है इसमें जो बेस है सेंट्स की स्टोरीज होना, जो हमारे साधु संत हुआ करते थे वो जो स्टोरीज सुनाते थे, मिरेकल सुनाते थे, मिरेकल किया करते थे, उन साधु संतों से रिलेटेड, सेंट से रिलेटेड जो प्लेस हैं दैट इज कॉल्ड मिरेकल प्ले। They specially reenacted miraculous inventions by the saints, although many scholars considered the term miracle play to include in the genre of mystery play, whereas mystery play are based upon scriptures. जैसा कि मैंने बताया जो मिरेकल प्ले थे वो सेंट्स पे बेस्ड थे, और जो मिस्ट्री प्लेस थे वो बाइबल, उनकी जो स्क्रिप्चर बाइबल थी उस पर बेस्ड थे। Some example of miracle plays are the conversion of Saint Paul, Mary Magdalene and the play of Scarment. These are some of the example. अभी हम इनको अच्छे से प्रॉपरली रीड करेंगे।
Some example of miracle play: the conversation of Saint Paul. इसमें मेनली क्या था? The Digby conversion of Saint Paul is a Middle English miracle play of the late 15th century. The play's dominant motif is conversion, which it explores through the biblical figure of Saul, who, thanks to a miraculous encounter, is changed from an avowed persecutor of Christians to a steadfast advocate for the faith. The stanzic form of the play is very regular rhyme royal. ठीक है. Our next is the play of the Scarment. The play of the Scarment is the only host miracle play to survive in English. It was written in the East Midland dialect of the Middle English not longer after 1461. Play of the Scarment tells the story of a miracle in which a real Jewish merchant and his companion purchased the concentrated host from a Christian merchant and subject it to a series of tests in the order to determine the truth of Christian claim that Christ is present in it. इनको आपको याद नहीं करना, जस्ट आपके नोटिस में होना चाहिए कि ये था. क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी है. ओके, दिस इज़ आवर मिरेकल प्लेस. Next is morality play. What is morality play? Morality plays involving from the medieval sermon conveyed a moral truth or lesson using allegorical terms. They personified moral qualities such as charity or vice, or abstractions such as death or youth. They are dramatized allegories of the life of man, his temptation and sinning, his quest for salvation, and his confrontation by death. The purpose of the morality plays was didactic. Its object was to instruct the audience on the application of Christian doctrine to everyday life and the cultivation of the character. Next is the sum of the example of morality play. Some of the morality plays are The Castle of Preservance. It is a 15th century morality play of 3649 lines. The play describes the whole ontology of man, opening before his birth and ending after his death, and his judgment before the throne of God. Next is The Smoing of Everyman. हमने पढ़ा था ना शुरू में एवरी मैन के बारे में, वो हम अब यहाँ प्रॉपरली पढ़ेंगे. दिस यूजली रेफर टू अ सिंपली एज एवरी मैन. इसको सिंपली एवरी मैन का नाम भी दिया गया. इज़ अ लेट 15th century इंग्लिश मॉरलिटी प्ले, अ शॉर्ट प्ले ऑफ सम 900 lines. It portrays a complacent everyman who is informed by death of his approaching end. Next is Skeleton Magnificence. It was written by John Skelton, often referred as a goodly interlude. It is considered to be the first extant political morality play. The play was designed to be acted in the hall of court of Henry VIII. Composed of 2500 lines, the play was printed around 1530. The play shows how magnificence is deceived by vices, but finally redeemed by good hope and preservance. Next is interlude. The term denotes a short play or playlet actually performed between the courses of cycle of plays. It can be applied to a variety of short entertainments, including secular farces and witty dialogues with a religious or political point. Interlude developed out of the morality
and the two cannot always be distinguished. जॉन हेवुड इज़ अ पॉपुलर राइटर ऑफ इंटरल्यूड इन दिस पीरियड. ये हम आगे जॉन हेवुड के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता लगेगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज important dramatists of the age of revival. These four are the important dramatists: Henry Medwall, जॉन रेस्टल, जॉन बेल, निकोलो मैकेवली. ठीक है, अब हम इनके बारे में प्रॉपरली पढ़ेंगे एक्सप्लेन करके. हेनरी मेडवॉल इज अ popular as the first non-English vernacular dramatist. You should keep in mind that he called the popular vernacular dramatist. He was educated at Eton College and the University of Cambridge and participated in the dramatic performance there. Okay. His literary career and works: he wrote a morality play, नेचर नाम का एक मॉरलिटी प्ले लिखा था, बट इज़ मोस्टली नोन फॉर ये उन्होंने लिखा था नेचर नाम का ये, लेकिन वो जो फेमस हुए थे, लेकिन वो अपने इस वर्क से सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, फल्जेंस एंड लुरेसी, द फर्स्ट सेक्युलर प्ले सर्वाइविंग इन इंग्लिश. आप ये नोट कर लीजिए प्लीज़, ताकि आप भूलें नहीं. Medwall's Fulgens and Luracy. The play is based upon a Crynonian declamation on true nobility, De vera nobilitate. It is the first vernacular play to be printed in England. It is the first play to show the influence of classical antiquity. It is the first in which a woman is the central character. Please note it down that it is the first जिसमें woman को central character रखा गया था. The heroine has to choose between two rival suitors. The play is a debate on the origins of true nobility, enlivened by the interruptions of household servants. Next is जॉन रेस्टल का टाइम स्पैन था जो 1475 to 1536 था. ही इज़ द इंग्लिश प्रिंटर एंड ऑथर. John Rastell was the son of a leading Coventry citizen and the Rector Justice of the Peace. Rastell's first press was at the Abbot of Wincham Place by the Fleet Bridge. In his literary career, he wrote all this: of Gentilians and Mobilite, the nature of the four elements, and Callisto and Malibia. आप इन्हें नोट कर लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. इससे रिलेटेड बहुत रेयर होता है जो क्वेश्चन आते हैं, बट पता होना चाहिए. मे बी अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए. Rastell's best known work is The Pastime of People, and second one is The Colonies of Divers Realms, and most especially of the realm of England. This is a chronicle dealing with the English history from the earliest time to the region of Richard the Tree. Next is John Bale. His lifespan is 1495 to 1563. John Bale was an English theologian, historian, playwright, literary historian, and Bishop of Ossory. His literary career and works are King Johan, that is a propaganda work, that is a propaganda play. The Image of Both Churches is the next work. This is most famous work of him. Next, A Comedy of Concerning Three Laws. And fourth, Vocation of Johan Bale to the Bishopric of Ossory in Ireland. Okay. Next
is Niccolo Machiavelli. His lifespan is 1469 to 1527. His mainly literary career works is Florentine Histories, Discourses on the first decade of Titus Livius, commonly known as the Discourses, a life of Castruccio Castracani, unfinished work. This is an unfinished work. Histories of the affair of Luca. Next, The Art of War, written in 7 books. Next is Machiavelli Mendagrola. This is most important work of him. This you should know about. So हमारा अब एंशियंट मेडिवियल एंड एंग्लो नॉर्मन ड्रामा यहाँ फिनिश होता है, जिसमें हमने एज ऑफ रिवाइवल भी अभी कवर कर लिया है. अभी जो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो रही है. हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें स्टार्ट करेंगे एलिजाबेथन टू जैकोबियन ड्रामा. मैं आपको पार्ट्स में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप इजीली रिवाइज कर सकें, इजीली आपको सब कुछ समझ आए और सब कुछ मगअप ना हो. इसलिए आप फर्स्टली इसको एक बार रिकॉल करिए. जिस भी स्टूडेंट को इसकी पीडीएफ चाहिए मैं उसको पीडीएफ सेंड कर दूँगी. आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, अपनी ईमेल भेज दीजिए, साथ ही मैं आपको उस पर सेंड कर दूँगी. और अगर इसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं आपको तुरंत ही उसका रिप्लाई करूँगी जो भी उसमें आपको समझ नहीं आया है. सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.